Hi everyone, this is Shivani from Lchf kitchen. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying healthy. So आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन चीज पॉकेट. It's crispy on outside, cheesy and creamy on the inside. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिलिंग के लिए हम लेंगे ब्लांच्ड ब्रोकली 200 ग्राम. उसमें ऐड कर दीजिए क्रीम चीज 50 ग्राम. नेक्स्ट ऐड कर दीजिए श्रेडेड मोज़रेला चीज 100 ग्राम. सिंपल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर अंटिल वेल कंबाइंड. थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए एंड आवर फिलिंग इज रेडी. नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे चिकन पॉकेट. उसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम मिंस्ड चिकन. इसमें ऐड कर दीजिए अनियन पाउडर, garlic powder, salt, paprika powder. Mix everything together until the seasoning are evenly distributed. Now our chicken mixture is ready. Let's assemble. एक parchment paper ले लीजिए and place the chicken on it. Cover it with another parchment paper and roll it out. Once you are happy with the thickness, carefully remove the top parchment paper. And next चीज़ी फिलिंग को हम सेंटर में प्लेस कर देंगे. आप अगर चाहें तो मशरूम्स भी इसमें यूज कर सकते हैं. Carefully fold the other half of the chicken over the filling to form a pocket. Press the edges gently to seal everything inside. Next, brush the top with one egg yolk. This gives the pocket beautiful color while baking. And finally sprinkle some parmesan powder on the top for an extra crispy and cheesy crust. And that's it. अब हम इसे बेक करेंगे. बेक कर दीजिए इसे 180 डिग्री सेल्सियस में 60 मिनट्स तक, और जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक आप इसे बेक करेंगे. अब हमारा बेकिंग इज डन. Just look at that golden crust. When you cut into it, you will see the creamy, cheesy broccoli filling melting inside. Every bite is packed with protein, flavor and healthy fats. This recipe is perfect for anyone who is following Lchf keto or high protein lifestyle. It's filling, nutritious and easy to prepare. Hope you enjoyed this recipe and thanks for your time. Please do subscribe to my channel if you are new here. I will see you in my next recipe. Until then, stay healthy, stay strong and keep enjoying your Lchf journey. Bye bye everyone. Lots of love.